hope am I audible to all. Guys, do comment if I'm audible to you. Hello. Yes, Sarthak, you are audible. Okay, great. So let's start with today's today's day 7 for the series, and we are good to go for today. But before starting today's session, you know, we want to see the excitement in you guys. Hope you guys, understood the previous concept what we have told you or what we make you study till now. Okay, so how you feeling, guys? Excited? Not? Okay, great, guys. Comments, more comments in the chat, guys. Okay, today we have Among Us with us. So in a very exciting way, today we are going to talk about functions. Today we are going to talk about many industries problem which surely help you in placements and when you do some coding exercise and upcoming sessions also. So let's get start with this session without any delay. So let's start the session. I think Kshitij, you are muted. So can you unmute yourself? Okay. I was muted. So Jablina and some of the students have asked कि कल वाले homework explain करेंगे please. Yes, Devlina, we will explain the questions. For that, we will record 2 of the videos and will upload them on the channel. So you will get those questions in the video. Let us proceed with further topics. When we will start topic of classes in C++. Today we are going to start the topic of classes. Also, Sarthak, it is a request to you to circulate among all of the groups so that we are today going to start with the classes and object-oriented programming. So please circulate this in all of the groups. Okay, Kishore, everything will be taught, so no worry about that. और आज functions और classes के concept शुरू कर देंगे. So let us show some enthusiasm और आज का topic शुरू करते हैं. Okay, guys, we are going to start in next 3 to 4 minutes. Actually, students are joining, and today is very important concept as far as concerned. अगर अभी नहीं समझ में आया तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा, मतलब नहीं समझ में आएगा, पूरे सेशन ऐसे वेस्ट जाएगा. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स. सब तक अपने जितने भी डाउट्स है अभी तक के वो सब पूछ लो. तो आई तो एक थिंक काम करते हैं अभी ना शुरू के 5 मिनट्स मेंटर टॉक करते हैं और अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो हम तीनों मेंटर्स अवेलेबल हैं तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट और उसके बाद आज का टॉपिक 6, 5, 6, 10 तक शुरू करते हैं. इतने बाकी लोग भी ज्वाइन करें आज. तो दिव्यसम यू आर लाइव ऑन स्क्रीन एंड आई एम आल्सो लाइव हियर. So if you guys are facing any issue, please feel free to ask. और एक मेरे को कई सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए that they are not able to solve some of the problems. तो जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, there is no issue in that. आप अपने टर्मिनल पे लिखो, आप अपना कोड दिखाओ आपने कितनी मेहनत की है, चाहे वो गलत कोड है, नो इश्यू अबाउट दैट. और नीचे एक कमेंट डाल के मेंशन कर दो that I was not able to solve this question, I have tried a lot. पर आप गलत चीज कुछ अपलोड मत करो ताकि हमको पता लगे कि that you have studied for that, you have worked for that, and we will provide you with correct solution. That is no need to worry about. Jablina has a question. Guys, regarding the patterns, आपको guys recorded videos of the solution will be shared. Other than that, if any doubt in concept, do pen in the chat. Yes, any concept is ओके. किशोर कुमार, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ उसके लिए. जो स्टार वाला प्रॉब्लम था ओके. चलो मैं इधर ही ड्रॉ कर देता हूँ. एक मेरा एक चीज है, ये मेरा स्टार वाला क्वेश्चन क्या था कि मेरे को ये और ये करना था. तो अगर आप ये देखो तो ये कौन से, अगर मैं इसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 मान, ये कॉलम 3 में है और कॉलम 3 की रो 1 में, तो जो मेरा 3 + 1 4 होगा, जो भी मेरा Shritan sir, your screen is not being visible. Okay, so let me share the screen. Okay, so I think the screen is visible now. तो अभी हमारा क्या था कि let me erase it again and start it from the very beginning. ओके, तो हमको क्या करना था अभी तक, इसके अंदर हमको क्या करना था, दैट हमारे पास एक स्टार था, एक स्टार इधर था, एंड एक स्टार वाज ऑन द टॉप, देयर वाज स्टार हियर ऑन एल, एंड एक स्टार हियर था. तो अब हमारा, अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. तो मैं ये कॉलम है, ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5. तो अब मेरा जितना भी है ये 3 + 1 4 के जो भी मल्टीपल, मतलब 3 + 0 अगर
1 और 3, 3 + 1 4, तो ये 4 पे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं ऐसे ही देखूं तो ये कोई ना कोई नंबर किसी ना किसी चीज से डिवाइड हो रहा होगा। ये मैं एग्जैक्ट लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर पूरा का पूरा एग्जैक्ट लॉजिक बताया जाएगा इसका कि ये कैसे डिवाइड हो रहा है, किस पे हो रहा है। इस चीज पे थोड़ा एक्सप्लोर करो कि ये डिवीजन के साथ खेल रहे हैं। मैंने एक हिंट दे दिया है कि इन दिस क्वेश्चन वी आर प्लेइंग विद डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो आप थोड़ा इस चीज को यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स ट्राई दिस। तो उसके बाद आगे हम चलते हैं और आगे वाली कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे रिवाइज करते हैं। एंड नोट्स कहाँ पे हैं? नोट्स राजेश आज आपके साथ शेयर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ टुडे सेशन बाय 10 PM। द नोट्स विल बी शेयर्ड इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप। जो आगे फर्दर नोट्स हैं, जो आज का टॉपिक है, पुराने टॉपिक के नोट्स। So I think so we are good to go with this session. तो आज सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है? अभी तक जिसके भी जो भी डाउट है आई थिंक सो अभी तक क्लियर हो चुके हैं, ठीक है? And बट अगर नहीं हुए हैं तो नो प्रॉब्लम, एट द एंड ऑफ द सेशन यू ऑल टेक केयर ऑल द डाउट्स। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। and लेट्स स्टार्ट। guys, just one thing, अगर आपको पैटर्न में अभी भी डाउट है, जस्ट रिमेंबर लाइक दिस, जितनी भी रोज प्रिंट करनी है वो आपकी आउटर फॉर लूप है, जितनी भी कॉलम्स है इनर लूप है। एंड नाउ ट्राई टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस। और दूसरी चीज की मैनिपुलेटर फंक्शन या कुछ भी यूज करो, जो आपके पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें डिपेंड करता है, डेट इज आउटपुट। आप कुछ भी यूज करके प्रिंट करो, डेट इज नॉट एन इशू, यू कैन यूज एनी ऑफ द थिंग। तो प्रोसीडिंग विद टुडेज सेशन, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्लीज लेट मी नो इफ इट इज विजिबल। दिस वन इज द स्क्रीन विजिबल? No, not yet. ओके ओके, तो चलो आज का शुरू करते हैं। आज का सेशन अपना फंक्शंस के बारे में। तो अभी थोड़ा अमंग अस की थीम पे बेस्ड है। आई थिंक अमंग अस तो सभी ने खेला ही होगा, तो अमंग अस की थीम पे बेस्ड है। आज का हमारा सेशन मेन है फंक्शंस पे। तो आफ्टर फंक्शंस हम चलते हैं। अब हमारा फंक्शन होता क्या है? व्हाट इज अ फंक्शन? तो फंक्शन हमारा एक पीस ऑफ प्रोग्राम है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो हमारा जो ये पीस ऑफ प्रोग्राम है ये क्या है? हमारा ये हमारा फंक्शन है। अब पीस ऑफ प्रोग्राम क्या बोलेंगे? और एक इसको मैंने एक और चीज बोली कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ओके, तो अब ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, मतलब जैसे मेरे को ऐड करना है तो इट विल ओनली परफॉर्म द एडिशन। ये सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा, इट विल ओनली परफॉर्म द एडिशन। इसी तरह से हमारा एक फंक्शन एक सिंगल टू सिंगल टास्क करेगा। नाउ लेट अस सी समथिंग मोर अबाउट फंक्शन। तो फंक्शन हमारी जो चीजें होती है दैट वर्क्स विद 4 ऑफ द थिंग्स। अब जो हमारी 4 चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन हमारे एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम बहुत सारी बार यूज कर सकते हैं। और ये फंक्शन की जो हमारी कॉलिंग है, ये कहीं से भी हम कॉलिंग हो सकती है, कहीं से भी कॉलिंग हो सकती है। अभी ये कौन CXPR दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पे? कौन CXPR इज ए न्यू कॉन्सेप्ट, और आज इस कौन CXPR को भी कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है C++ में। और फंक्शन की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन, वी कैन डू डेफिनेशन डिक्लेरेशन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ प्लेस, और वी कैन आल्सो डू इट एट मल्टीपल प्लेसेस एज वेल। तो अब ये तो हमारा फंक्शंस के बारे में बेसिक चीजें होगी। अब एक हम फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। तो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन? सबसे पहले हमको रिटर्न टाइप पता होना चाहिए फंक्शन का। फिर एक फंक्शन, हर एक फंक्शन का एक फंक्शन नेम होता है, एंड आफ्टर द नेम इज देयर हम एक पैरामीटर सप्लाई करते हैं। देयर वर सम ऑफ द डाउट्स फ्रॉम यू गाइस प्रीवियसली कि हम मेन के अंदर वर्ड क्यों लिख रहे हैं। तो आज वो डाउट क्लियर हो जाएगा जब हम पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब ये पैरामीटर्स क्या हैं? पैरामीटर्स हमारे फंक्शन की वो चीज़ है जो फंक्शन जिस तरह से वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो फंक्शन एक्सेप्ट द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर। अब मेरे को एक फंक्शन बनाना है, जैसे मैंने बता दिया ऐड का फंक्शन है मेरा एक। तो ऐड के फंक्शन में मेरे को 2 नंबर एक्सेप्ट करने हैं और मेरे को उनका सम रिटर्न करना है। तो मेरे फंक्शन को 2 नंबर चाहिए, जैसे मैंने 7 और 8 डाल दिया। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ऐड 7 एंड 8 करके इट विल रिटर्न 15। Presentation using Among Us theme is really great. Okay. Priyanshu, that is something of nice concept. हमने थोड़ा सेशन इनफॉर्मल वे में रखा है, तो आज थोड़ा मजा आने वाला है इस थीम से रिलेटेड। तो अब हमारा ऐड फंक्शन यूज करें, ये हमारा एक सिंपल एक फंक्शन है। अब अगर नीचे भी पढ़ो, फंक्शन कैन टेक इनपुट एज आर्ग्यूमेंट। जो हमने लिए इनकी, जो हम इनको बोलते हैं पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आर नोन एज आर्ग्यूमेंट, and they can produce the output by returning a value.
तो हम जो ये वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न टाइप, दे कैन प्रोड्यूस एन आउटपुट बाय रिटर्निंग ए वैल्यू। और एक फंक्शन होता है, मतलब उसके अंदर आप कितना भी लिख सकते हो कि एक ही फंक्शन में आप ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों भी करवा सकते हो, बट इट इज रिकमेंडेड टू यूज ए फंक्शन फॉर अ सिंगल फंक्शनैलिटी ओनली। तो हम इट इज रिकमेंडेड फॉर ए सिंगल फंक्शनैलिटी, आप अपने अकॉर्डिंग तो कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि जब हम सिंगल फंक्शनैलिटी के लिए बनाते हैं तो वो एक थोड़ा हमारे लिए कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ा देता है। अब अगर अभी तक किसी को वो हो डाउट हो कोई या बेसिक फंक्शन से रिलेटेड, फिर हम एक बेसिक फंक्शन का कोड करके देखते हैं। और एक ये फन फैक्ट है, सी प्लस प्लस का थोड़ा एक फन फैक्ट भी बताते हैं कि जो सी प्लस प्लस हमारा नेम है वो सी से आया था, और सी से जो ये प्लस प्लस हमारा आया था, ये प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो बताते हैं कि ये सी से नेक्स्ट लेवल लैंग्वेज है, मतलब सी के बाद हुई लैंग्वेज है। और ये एक फन फैक्ट है कि ये प्लस प्लस और कुछ नहीं है, आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डेट इज नथिंग लाइक एनीथिंग अदर। तो अब थोड़ा कोड पे भी आ जाते हैं, कोड सेक्शन करते हैं हम थोड़ा। एक फंक्शन बनाते हैं ऐड का, जैसे कि मैंने बताया था, हैशटैग इंक्लूड std इन मेन। अब डाउट था लोगों का कि इन मेन वर्ड क्यों लिखते हैं, जैसे कि जैसे हमने कई बार लिखा इन मेन वर्ड, देयर वाज अ डाउट अबाउट वर्ड। Here is a void because main is accepting nothing as an input from outside. If void is there, it means that there is the function is not receiving anything so as an input from the outside. अब आप बोलोगे कि मेन में इनपुट कैसे देंगे, मेन तो चलने के बाद ही इनपुट आएगा ना। तो फर्दर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एज वेल। तो इसके अंदर भी बड़ा मजा आने वाला है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में, आपको पता चलेगा आप मेन को भी कैसे इनपुट दे सकते हो। अब एक मैं बोलता हूँ एक चीज, इंट ए और मैंने बी, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, सी इन ए करवा लिया और सी इन मैंने बी करवा लिया, और सी इन ए बी कोई बड़ी चीज नहीं है। एट द एंड मेरे को क्या करना है, सी आउट करना है मेरे को, पहले ए प्लस बी करना है मेरे को, फिर उसको डिवाइड बाय 2 करना है, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 67 एंड आई हैव टू ऐड 12 इन इट। अब मेरे को एक ये करना है, और ये मेरे को एक चीज गिवन है, मेरे को जो भी दो नंबर्स आएंगे उन दो नंबर्स के साथ यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब क्या होगा कि मैंने एक ये ए और बी बनाया, ए और बी के लिए मैंने ऑपरेशन कर दिया, ओके। तो ए और बी के लिए मैंने ऑपरेशन एक ये कर दिया। नाउ आई एम डिक्लेयरिंग अंदर वैल्यू सी एंड डी, और मेरे को सी और डी के लिए भी यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्या होगा कि मैंने ये लाइन कॉपी करी, पेस्ट करी, और फिर आई हैव टू चेंज इट फॉर सी एंड डी। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि हमारा कोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड आई हैव टू रिपीट दिस लाइन अगेन एंड अगेन। अब मेरे को ई और एफ के लिए भी करना है, तो आई विल हैव टू टेक द लाइन एंड रिपीट इट फॉर ई एंड एफ ऑल्सो, एंड देन जी एंड एच ऑल्सो। so it will take a very huge amount of time। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को वैल्यू प्रिंट ही तो करवानी है, तो लेट अस डू इट इन सम फंक्शन। अब फंक्शन में कैसे करते हैं हम, सबसे पहले तो हमको रिटर्न टाइप, अब मेरे को इस तरफ इसको प्रिंट करवाना है, तो आई नीड नॉट टू रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम द फंक्शन। अब मेरे को फंक्शन से कुछ वापस नहीं चाहिए बिकॉज आई वांट टू प्रिंट इट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, तो आई विल टेक द रिटर्न टाइप एज void। अब मेरे को एक फंक्शन का नाम देना है प्रिंट रिजल्ट। मैं फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकता हूँ, बट इट इज प्रेफर्ड अगर आप कोई एक फेवरेबल नेम दोगे जिससे आपको पता चल जाए फंक्शन काम क्या कर रहा है। रिजल्ट। अब मेरे को क्या करा कि मैंने दो नंबर एक्सेप्ट किए जो इंट टाइप के थे, तो इंट n1 एंड इंट n2। अब मैंने दो नंबर एक्सेप्ट कर लिए। अब द फंक्शन इज एक्सेप्टिंग टू नंबर। अब ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स हो गए, आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई की फंक्शन दो नंबर को एज ए इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, एंड वर्ड स्पेसिफाई की फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन को स्टार्ट कर दिया, ये हमारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं, दे डिफाइन द ब्लॉक ऑफ अ फंक्शन। अब इस ब्लॉक का कैसे काम होता है कि अब बड़ा मजा आने वाला है इसके बारे में सुन के। अब मैंने क्या किया, मेरे को हर बार यही तो चीज करवानी थी, तो मैंने क्या किया, इस चीज को इसके अंदर डिफाइन कर दिया, एंड रिटर्न ए प्लस बी की जगह मेरे पास जो इसमें नंबर आए थे देवर n1 एंड
n2 जो इसने इनपुट दिया था नंबर का, n1 एंड n2 जो यहाँ पे स्पेसिफाइड है, मैंने इनको ऑपरेशन करवा के प्रिंट करवा के एक एंडल का प्रिंट भी दे दिया। तो आज हमारा ये वाली चीज हुई, हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया है। अब आफ्टर प्रिंटिंग माय रिजल्ट, अब मेरे को क्या करना था, अब मेरे को इनके लिए लाइन ऑफ कोड हटानी थी। अब तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द फंक्शन है। तो अब मैंने क्या किया, फंक्शन यूज किया प्रिंट रिजल्ट। अब मैंने प्रिंट रिजल्ट फंक्शन कॉल किया और इससे में मेरे को सिर्फ दो वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, ए एंड बी, जिसके ऊपर भी मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं। तो व्हाट विल हैपन इन द बैक, ये ए जाके इस n1 की वैल्यूज ले लेगा और ये बी जाके इस n2 की वैल्यूज ले लेगा। So the thing will be covered like this. And when I want to perform the same thing with C and D, I need not to write the complete line. मेरे को सिर्फ फंक्शन कॉल करना है जिसमें मेरे को C और D सप्लाई करना है। So these thing will be there. Let us run the code and see. अब एक और डाउट होगा आपका, जब हमारा रिटर्न टाइप int था, then we are returning 0 or returning some of the integer value. But when the return type is void, and I had said that the function returns nothing when it is void, तब हम क्या return करेंगे? So we use the return statement only. We use nothing, or we can return void as well. So it will return void. और इसमें भी देखो error आ गया है, so we will return only, we will return nothing. So we will return like. अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कोड को कि चलेगा, क्या चलेगा, कैसे आउटपुट आएगा। So let us compile. कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस पे भी आते हैं, हम उस पे भी आते हैं, उस वाले कॉन्सेप्ट पे भी जब लेना। सो वी विल आल्सो गेट टू लर्न दैट कॉन्सेप्ट इन टुडेज सेशन। यस, वी कैन यूज void main also खुशी, बट इट इज प्रेफर्ड टू यूज int main। अब मैं दो इनपुट देता हूँ, जैसे मैंने 3 और 4 इनपुट दिए, तो 3 और 4 ओके, C और D के लिए मैंने इनपुट ही नहीं दिया, तो ये इसने कुछ भी गार्बेज वैल्यू उठा के भेज दी। C in C and C। Video is not clear, sir. Akshita is saying that video is not clear. Is there anyone who is facing the issue that my video is not clear? Please let me know. 3 and 4 are the values, and then Okay, guys, you can change the setting to 180 pixel, so it will be clear for you guys. Do that thing, it will be clear for you. We are streaming in 1080, sorry, 1080 1080 pixels, तो आप कर सकते हो. It will be clear to you guys. हाँ, जिसको भी वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है तो डेट विल बी क्लियर। क्वालिटी बढ़ा लो यार, क्वालिटी तो इतनी ही 1080p में क्वालिटी जा रही है। दैट समथिंग डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड आल्सो, एंड दैट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स एज वेल। तो अब बाकी आप क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो, एंड यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशन एज वेल अगर आपको थोड़ा इशू आ रहा है। बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाइव में समझो, ताकि आप कोड जाके दोबारा से अपने आप से प्रैक्टिस कर सको। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आगे चलते हैं आज के सेशन पे। अभी एक चीज बताओ, फंक्शन डिक्लेयर करने में, फंक्शन के अंदर कैसे काम करता है, हाउ इट इज एक्सेप्टिंग द वैल्यूज, हाउ इट इज रिटर्निंग द वैल्यू। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? इज दिस क्लियर? और अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे को ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं करनी है, आई वांट टू रिटर्न इट, तो वी कैन यूज रिटर्न हियर। तो ये क्या करेगा, द वैल्यू विल नॉट बी प्रिंटेड हियर। और रिटर्न करने के लिए मेरे को एंडल देने की जरूरत नहीं है, सो आई विल रिटर्न द वैल्यू एंड आई विल चेंज द टाइप टू इंट ओनली। तो दिस थिंग विल बी डन है। अब मेरा इसका रिजल्ट प्रिंट ही नहीं होगा। अगर जैसे मैं प्रिंट करता हूँ रिजल्ट, थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। C++001
और मैंने डाली 3 और 4 डाली मैंने वैल्यूज एंड 7 एंड 8 डाली, तो इट इज नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग, क्योंकि अब मैंने इंटीजर एक रिटर्न कर दिया है। और इंटीजर रिटर्न होगा, तो इंटीजर रिटर्न होगा यहाँ पे। अब मेरा यहाँ पे इंटीजर रिटर्न हो गया, बट आई एम नॉट स्पेसिफाइंग हेयर कि मेरे को ये वैल्यू प्रिंट करनी है या मेरे को इसके साथ क्या करना है। तो इफ आई वांट टू प्रिंट, मैं यहाँ पे सी आउट दे सकता हूँ। सी आउट देके ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और अगर मेरे को स्टोर करनी है तो मैं स्टोर भी कर सकता हूँ। आई विल टेक इंट result1 equal to the value will be stored in result1 and we can print result1 as well at some later point of time। तो हम अपने फंक्शन के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और ये फंक्शन का एक बेसिक सिंटैक्स है। तो अगर बेसिक सिंटैक्स में कोई दिक्कत आए, देख देता हूँ पुहान भैया, अगर मेन फंक्शन वर्ड से पहले लिखते हैं तो क्या, अरे अगर मेन फंक्शन इससे पहले लिखोगे तो भी कंपाइल हो जाएगा। सी प्लस प्लस हैज सॉल्व्ड दिस इशू एज वेल। और उसके लिए हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन अलग अलग भी दे सकते हैं, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। वो भी चीज़ें हम बताते हैं। अभी थोड़ा एक बार बैक टू द बेसिक्स। इतने में अगर कोई फंक्शन डिफाइन करने में या डिक्लेयर करने में इफ समवन इज फेसिंग प्रॉब्लम, तो प्लीज फील फ्री टू पिंग और लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक और आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, अब आते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पे। तो अब हमारा आया फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? अभी मैंने एक फंक्शन बना दिया ऐड, विच इज एडिंग 2 नंबर। एक जैसे मैं एक सिंपल सा एक फंक्शन बना लेता हूँ साथ साथ। अब मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया हैशटैग इंक्लूड इन a equal to 3 and then equal to 4. तो अब मैंने एक ये फंक्शन बना लिया है एंड दिस व्हाट इट इज दिस फंक्शन इज डूइंग कि ये दो वैल्यूज को इनपुट ले रहा है और ये उनका आउटपुट करके सम प्रिंट कर रहा है। तो दिस इज अ बेसिक फंक्शन और आई थिंक ये बेसिक फंक्शन का सिंटैक्स सबको क्लियर होगा। बट व्हाट इफ आई हैव 3 नंबर्स नाउ int a b and int c is equal to 5 and I want to add the 3 numbers. So what I would, if I am doing like add a comma b comma c, so will this function work? क्या ये 3 नंबर को ऐड करके देगा मेरे को? Will this function work? A, B and C. It's not clear. What is not clear, Abhila, Umesh? You can please tell me what is not clear and then we will try to resolve your doubt as well. कुछ लोगों का डाउट है yes, she is saying error and Manish is saying no, Mohammed is saying no. So a function which is declared for 2 variables will not be able to work for 3 variables. बट मेरे को अपने कोड में क्या चाहिए, दो एक सिंपल फंक्शनैलिटी चाहिए कि मेरे को ऐड एक 2 नंबर्स करके दे और एक 3 नंबर्स करके दे। तो एक क्या है, मैंने एक फंक्शन बना लिया add1 which is adding 2 numbers and I have declared another function add2 which is adding 3 numbers int n3 plus n3. So it is returning 3 numbers। ऐड 1 कॉल कर दिया मैंने इधर जब मेरे को 2 नंबर्स ऐड करने थे, ऐड 2 कॉल कर दिया जब मेरे को 3 नंबर्स ऐड करने थे। तो नाउ द कोड विल वर्क, क्योंकि मेरे पास 2 नंबर के लिए भी एक फंक्शन है तो मेरे पास 3 नंबर के लिए भी एक फंक्शन है। बट no, we cannot do that because we are printing the values. If we return the values then we will be able to do that, Kuldeep. We are not returning the value as of now, we are printing it in here.
We are not returning. I am only printing it. See, there is a difference in returning and printing the value. ओके, तो अब मैंने क्या किया, मैंने दो अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर दिए एंड द फंक्शंस आर एडिंग टू वैल्यू. बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि देयर शुड बी अ सिंगल फंक्शन फॉर अ सिंगल फंक्शनैलिटी, ताकि हमारा कोड रिपीटिशन बचे. अब मैंने मल्टीपल फंक्शंस बना दिए एंड I should have to remember every time when I am adding two value I should use add one, and when I am adding three value I should use add two. So I am having two functions. Yes, Vishal. What if both functions have same name, add only? Yes, yes. I am going to discuss that thing. तो अब हमारा फंक्शन है, हम अपने फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं. व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? हम क्या करते हैं, वी डिफाइन टू फंक्शंस ऑफ द सेम नेम. तो हमारे जो सेम नेम के फंक्शन होते हैं दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शनैलिटी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग. हम दो फंक्शन सेम नेम के भी बना सकते हैं. तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, क्रिएट अ फंक्शन ऑफ सेम नेम. अब स्टेप टू क्या है, मेक द पैरामीटर डिफरेंट फॉर द फंक्शन. अब जैसे कि अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसके जो पैरामीटर्स थे वो टू पैरामीटर्स थे और इसके जो पैरामीटर्स थे वो थ्री पैरामीटर्स थे. ठीक है, तो ये फंक्शन ओवरलोड हो सकते हैं. बट अगर मैंने एक और फंक्शन बना दिया जिसका मैंने पैरामीटर सेम करे और मैंने ये इंट कर दिया, इसका रिटर्न टाइप आई हैव चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ इट. ठीक है, अगर मैंने रिटर्न टाइप चेंज किया तो रिटर्न टाइप इज नॉट कंसिडर्ड फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग. ये बहुत बड़ा फैक्ट है दैट यू शुड रिमेंबर, दैट द रिटर्न टाइप इज नॉट कंसिडर्ड फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग. तो जो हमको मेन चेंज करना होगा, दैट आई हैव टू चेंज द सिग्नेचर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द फंक्शन. अगर मैं इंट की जगह यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ देन इट इज कम्प्लीटली परफेक्ट, क्योंकि अब मेरा फंक्शन का सिग्नेचर चेंज हो गया है. द फंक्शन इज एक्सेप्टिंग ए फ्लोट वैल्यू एंड अनदर इंट वैल्यू, एंड हियर द बोथ वैल्यूज आर इंटीजर वैल्यू. तो अब मेरा फंक्शन कैन डिफरेंशिएट. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटर्न टाइप में फंक्शन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू ऑफ द वैल्यू. अब मैंने क्या किया, जब हम करते हैं इससे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो जाता है. तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है उसको भी हम अभी देखते हैं आगे. और फंक्शन ओवरलोडिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है. अब इसको देखते हैं कि हमने फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे की. अब मैंने क्या किया, दोनों फंक्शन को सेम नेम से डिफाइन कर दिया, इंट ऐड एंड इंट ऐड. अब मैंने दोनों को आउटपुट पे दे दिए एंड व्हेनेवर आई कॉल ऐड, तो ये अगर दो नंबर्स होंगे तो दो नंबर को कॉल कर देगा, अगर थ्री नंबर्स होंगे देन इट विल ऑटोमेटिकली चेंज टू थ्री नंबर. लेट अस रन द कोड एंड सी इट इफ इट इज हैपनिंग और नॉट. Okay, 7 and 12 is the output. Let me print some next line also. Let me compile the code and run it again. तो अगर इतने में किसी को डाउट हो, आई थिंक द फाइल वाज नॉट सेव्ड. It should print an end line. I'm printing an end line, but I think there is some issue with that. पता नहीं ये काम ही नहीं कर रहा है. ओके, दैट इज नॉट एन इशू, बट ये ऐड है, मैं यहीं पे एक एंड लाइन दे देता हूँ. ओके ओके, हाँ मैंने फर्स्ट फंक्शन में एंड लाइन ऐड ही नहीं किया. सॉरी 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 फॉर दैट. ओके ओके ओके, तो इसीलिए काम कैसे करेगा वो. सॉरी फॉर दैट थिंग.
तो अब जो मेरा आउटपुट दैट इज 7 and 12, 7 is the output of first function, 12 is the output for the second function. तो अब मेरे फंक्शन एक ओवरलोड हो गया है. अब I have a function of same name and they are performing, they have different signature. अभी देखो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इट इज ऑल्सो शोइंग दैट इट इज वन टाइम ओवरलोडेड. अगर मैं इसको दोबारा से भी ओवरलोड कर सकता हूँ, सपोज आई वांट टू हैव अ फंक्शन फॉर एडिंग 4 नंबर्स, add int n1 int n2 int n3 and int n4. तो अब मैं एक फंक्शन भी बना सकता हूँ ऐसा जो 4 नंबर्स को ऐड करेगा, n1 plus n2 plus n3 plus n4. So this is the thing that we can achieve. अब मेरा ये फंक्शन 2 times ओवरलोडेड हो गया है. Where is the function signature is stored by the compiler and we use the function signature again so that it can be used. Yes, I have Nitish, I have said that the function signature should be different, but I have also added a line that return type is not considered when we consider the function signature in case of operator overloading. In case of operator overloading, the return type is not of any significance. So we are using the function signature, which means the function name and the data type, the argument. So I am saying about that. I am not considering the return type, and I have said clearly that the return type will not be considered. Actually, the function signature is this. The complete line is the function signature, and the return type is not considered when we overload the function. Okay, so I think that is the thing about function overloading. और एक कॉन्सेप्ट आता है. अब मैंने दो फंक्शन बना दिए. First is int sum n1 and n2, and then I have created a function int sum n1, n2 and n3. तो अब एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा फंक्शन ओवरलोडेड है. Is the function accepting 2 parameters is overloaded or is the function accepting 3 parameters is overloaded? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसमें ओवरलोडेड है? ये वाला फंक्शन ओवरलोडेड है. अगर ये वाला फंक्शन ओवरलोडेड है तो ब्लू कमेंट करो, अगर ये वाला फंक्शन ओवरलोडेड है तो रेड कमेंट करो. एक बार देखते हैं कि which function is overloaded. Please let me know in the comment section कि फंक्शन कौन सा ओवरलोडेड है. Someone is saying red, blue, red, blue. They are saying red, and someone is saying blue as well. तो अगर इसमें देखा जाए तो both of the function are overloaded. जब function overloading की बात आती है, because the function is of same name, तो both the function are overloaded. ऐसा कुछ नहीं होता कि एक single function is overloaded. All the functions that have the same name are all overloaded. अभी अगर मैं इसको एक concept को अगर मैं कोड से भी समझाऊँ तो अगर ये देखो मैंने add करा, add is overloaded by 2 overload, then again add is overloaded by 2 overload, and this add is also overloaded by 2 overload. So all the functions are overloaded that have the same name. It is nothing like the concept that one function will be overloaded and another function will not be overloaded. Both of the function will be overloaded here. तो अभी कोड लोग देखने की बात करें तो you can see the code here. I am zooming out a little bit so that the complete code will be visible. तो अगर किसी को कोड में इशू है एक बार कोड देख लो. What function we use to add more numbers? We will discuss that, Mohammed. We can use a for loop and we can use anything else also. So there is no need to worry about that, and there might be some of the inbuilt functions, so we can use that as well. तो अभी ये देख लो कि कौन सा वो है कि ये कोड आई थिंक सबको क्लियर होगा. अगर इफ समवन इज फेसिंग एनी इशू इन द कोड तो आप कोड से वो करो. और अभी एक मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा. आज आप सबके लिए एक होमवर्क है कि आई हैव ओवरलोडेड द फंक्शन. मैंने एक फंक्शन को ओवरलोड किया है, क्योंकि ओवरलोडिंग में फंक्शन क्या बोलते हैं कि मैं इसको एक डिफरेंट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट से कॉल कर रहा हूँ और मैं इसको एक डिफरेंट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट से कॉल कर रहा हूँ. तो आई एम यूजिंग
टू डिफरेंट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू कॉल द फंक्शन। पर अब मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, यू हैव टू डिफाइन अ सिंगल फंक्शन, मतलब कि एक सिंगल ही फंक्शन डिफाइन करना है, एंड आई हैव टू ओवरलोड इट। अब एक सिंगल फंक्शन को कैसे ओवरलोड करेंगे? इज इट इवन पॉसिबल टू ओवरलोड ए सिंगल फंक्शन? पहले तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि सिंगल फंक्शन को ओवरलोड करना, इज इट पॉसिबल दैट आई कैन ओवरलोड ए सिंगल फंक्शन? Shall is a question where the parameters and return type of function is different. The function is same name. It is over. Yes, return type does not play a major role. अगर आपके पैरामीटर डिफरेंट हैं और फंक्शन का सेम नेम है, then the function will be overloaded. Okay, all of you are saying no कि हम एक सिंगल फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं. खुशी is saying yes. खुशी, I am with you. मैं भी बोलता हूँ हम एक सिंगल फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं, बट कैसे ओवरलोड कर सकते हैं? अक्षत, आई एम विद यू एज वेल. हम एक सिंगल फंक्शन को भी ओवरलोड कर सकते हैं बाय पासिंग एंड एक्सेप्टिंग डिफरेंट नंबर ऑफ, हम एक डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सिंगल फंक्शन में कैसे पास करेंगे? आप मेरे को एक बार कोड लिख के दिखाओगे? मोर देन वन इज रिक्वायर्ड. यार हम नेस्टेड फंक्शन भी बताएंगे, वी विल टीच यू एवरीथिंग. एक बार रुक तो जाओ, एक बार थोड़ा रुको तो. और एक सिंगल फंक्शन को कैसे ओवरलोड करना है, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. कल मैं स्ट्रीम में आके आपको बताऊंगा कि हाउ टू ओवरलोड ए सिंगल फंक्शन. Okay, some of you are well equipped with knowledge, like some of them are saying variable length arguments, some of them we can overload inbuilt function. No, no, no. We have to define a function and then have to overload it in this. We have to use a single function definition only. Yes, it is an interesting homework. Let us see how many of you are able to perform. Like I have to overload this function only. I have to overload a single function like this. I do not have to overload any of the inbuilt functions. The inbuilt functions are declared once already, and when we are declaring it again, they are using some of the different concepts. So then our templates is also a data type. So हम template use नहीं करेंगे. We will only use the integer data type. हम एक integer data type ही use करेंगे and we will overload the function. ओके, तो अभी फंक्शन ओवरलोडिंग का बेसिक मैंने बता दिया. कल हम देखते हैं कि हाउ टू ओवरलोड ए सिंगल फंक्शन. अब एक फंक्शन टेम्पलेट की बात आती है. ठीक है, अब फंक्शन टेम्पलेट क्या होता है कि अब मैंने एक ये बनाया था, एक मैंने फंक्शन बनाया ऐड का. ऐड फंक्शन क्या कर रहा था? इट वाज एडिंग टू इंटीजर वेरिएबल. बट अब मेरे को क्या चाहिए कि एक फंक्शन बनाऊंगा दैट इज एडिंग टू फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यूज. तो अब हाउ टू अचीव इट? या तो मैं फंक्शन एक नया फंक्शन डिक्लेयर कर सकता हूँ, या मैं फंक्शन को ओवरलोड कर सकता हूँ फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए. बट अगर मैं बोलूँ कि मैं सिंगल फंक्शन में फ्लोट वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लूंगा यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट ओनली, और फंक्शन टेम्पलेट को मैं कल के आंसर में कंसिडर नहीं करूंगा, तो थोड़ा अच्छा सा आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट सोचो, मजा आएगा सिंगल फंक्शन को ओवरलोड करने में भी. और फंक्शन टेम्पलेट भी वो आएगा, एक टॉपिक है फंक्शन टेम्पलेट, आज हम कवर करते हैं. अब फंक्शन टेम्पलेट को हम जेनेरिक फंक्शन बोलते हैं क्योंकि ये मल्टीपल डाटा टाइप को इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट कर लेगा. और डाटा टाइप हमारा जो डाटा का होगा, rather than specifying it earlier, it will specify the data at the runtime. And we can use a single definition of function to achieve a template variable. तो template variable क्या होता है कि हमने एक variable डिक्लेयर कर दिया that is a pseudo data type, और ये रन टाइम को ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देगा कि मैं इस डाटा टाइप का हूँ, एंड इट विल वर्क अकॉर्डिंगली. और हमारे फंक्शन में एरर्स नहीं आएंगे क्योंकि हम बहुत सारे डाटा टाइप्स इसके अंदर पहले से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो अब टेम्पलेट हम कैसे बनाते हैं? तो एक इसको छोड़ते हैं, हम सीधा कोडिंग पे आते हैं. फंक्शन टेम्पलेट इज दिस अनअकैडमी चैनल? नहीं भाई, अनअकैडमी का चैनल क्यों है? दिस इज द डॉट क्वेश्चन मार्क चैनल एंड द डॉट क्वेश्चन मार्क कम्युनिटी इज वर्किंग बिहाइंड इट. दिस इज नॉट एन अनअकैडमी चैनल. तो एक फाइल बनाते हैं 003 and template dot tag include
using say std in main। हम मैंने एक वेरिएबल बना दी int a कॉमा b और फ्लोट c कॉमा d। अब मेरे को एक फंक्शन कॉल करना है ऐड फॉर a कॉमा b एंड ऐड ही मेरे को कॉल करना है फॉर c कॉमा d। ओके, अब ये मेरा फंक्शन ऐड मैंने कॉल कर दिया, मैंने इनको इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। ऐड इक्वल टू c, a equal to 3, b equal to 4, here c is equal to 3.13 and b is equal to 4.14। तो मैंने इनको डिक्लेयर भी कर दिया। अब मेरे को ऐड कॉल करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द टेम्पलेट कीवर्ड। आफ्टर टेम्पलेट कीवर्ड we will use class and I will use t। I can use any of the words. T is not like this is syntax. I can use T, E, M, P. So I can use any of the words. And now temp will be a data type for me. So I will use temp as a data type to return the temporary variable. And I will use the function to add. And I will accept the value of temporary data type temp n1 and temp n2। ठीक है, अब ये मैंने temp का एक फंक्शन बना दिया एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिटर्निंग ए वैल्यू n1 प्लस n2। अब मैंने इसको मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ एंड लेट अस सी व्हाट विल बी द आउटपुट। और हैंडल भी कर देते हैं। लेट अस सी कि अब ये दोनों फंक्शन के साथ सिंगल फंक्शन काम करेगा कि नहीं। तो अब ये देखो इसमें 7 एंड 7.27, तो ए सिंगल फंक्शन इज वर्किंग विद बोथ ऑफ द वैल्यूज और ये सारे के साथ काम कर रहा है। तो ए टेम्पलेट इज डूइंग दिस। बट अगर मैं बोलता हूँ अब मेरे को यहाँ पे भी दो अलग अलग टाइप के डाटा चाहिए, लाइक आई एम एडिंग सी आउट एड ए एंड सी, और मैं चाहता हूँ कि ए कम स्पेस यूज करे या आई एम एंड passing a string as well। So what I will do, I will add class temp and class temp2। I will pass two of the values। I will say temp1 टाइप का ये हमारा डाटा टाइप हो गया, temp2 टाइप का हमारा ये डाटा टाइप हो गया और हमने temp2 की फॉर्म में ये रिटर्न कर दिया। ओके, सो इट वाज temp ओनली एंड temp2। तो अब ये इसके साथ भी काम कर जाएगा। So we can specify multiple data types as well in the collection in our template function। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे साथ। आर्ग्यूमेंट्स की बात है, आर्ग्यूमेंट्स और बाकी चीज़ों पे आई थिंक हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं इफ वी हैव सम ऑफ द टाइम, और हम कल के सेशन में डिस्कस करते हैं। अब आपको बेसिक फंक्शंस आ गए होंगे। तो is someone facing the doubt till the template concept कि template का concept तो अब ये सबको समझ में आ गया होगा ना कि हम सिंगल वेरिएबल या डबल डाटा टाइप के साथ टेम्पलेट और बाकी चीजें कैसे कर सकते हैं। तो if you are facing some issues you can please tell। some of the issues till now। what is not clear, Jay Yadav, can you please elaborate? I will then revise it again। What is the significance of template? Okay, Khushi, you are asking about the significance of template। So let me move back a slide। तो फंक्शन का टेम्पलेट का सिग्निफिकेंस क्या है, लेट मी क्लियर इट। तो अब हमारा ये पूरा का पूरा जो हमारा लिखा हुआ है दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फंक्शन टेम्पलेट। पहली बात तो हमें एक सिंगल फंक्शन बना के मल्टीपल डाटा टाइप के साथ
वर्क कर सकते हैं। एंड डाटा टाइप हमको एट कंपाइल टाइम हमको बताना नहीं पड़ता, एट द टाइम ऑफ कोडिंग data type is automatically decided at the runtime only. So this is the about the importance of the function templates and how we can work with it. और template का ही concept है that whole SQL library is based on the template concept only. I use template, so overloading is not. Overloading was a concept जो बहुत पहले आया था. Okay, and template is a concept which was introduced later. So we must be familiar about everything. तो इसीलिए हमने आपको पहले ओवरलोडिंग के बारे में बताया, जैसे ओवरलोडिंग आई थी, और अब फंक्शन टेम्पलेट के बारे में बताया. वी कैन यूज फंक्शन टेम्पलेट. और फंक्शन टेम्पलेट क्या है कि आपका अभी जैसे मैंने एक फंक्शन टेम्पलेट बताया, तो फंक्शन टेम्पलेट के अंदर एक डिसएडवांटेज है दैट फंक्शन ओवरलोडिंग. अगर फंक्शन टेम्पलेट में मेरे को 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने हैं, देन आई कैन यूज अ फंक्शन टेम्पलेट और 2 अलग अलग डाटा टाइप्स हो सकते हैं. बट इन फंक्शन ओवरलोडिंग मैं 3 आर्ग्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ. So function overloading will work with 3 arguments as well. Function template सिर्फ same number of arguments के साथ काम करेगा using different data types. ठीक है. So this is the concept. Can we use a single function by using? Yes, Anupam you are correct. और उसको भी हम देखेंगे, वो कल बताऊंगा मैं. अभी थोड़ा oops के concept पे आते हैं, and if we get some of the further time हम आगे का function भी discuss करेंगे, जिसके अंदर हम अपने function के return type और arguments के बारे में बात करते हैं. But we need to start oops concept as of today. तो हम oops भी करते हैं और उसके बाद function भी आगे continue करते हैं, rather be it today or be it tomorrow as well. तो अब oops के concept पे आते हैं. So I would like to invite Divyasan Puhan and he can continue with the function and oops concept as well. Hello. Yes. Am I audible? Can someone give me a? You are audible. Can someone confirm me if there is some background noise? Or should I No, it is. make it better? It is clear, but if there is a bit of background noise. Just wait a second. Can we overload template? Yes, we can overload template, Pawan. You should try it. It is an interesting thing. Okay, so hello everyone, and thank you for joining the stream today. And I hope everyone is clear with functions. So आज तक what are functions doing in our code? Function हमारी पूरी जो code है ना C++ की, उसको divide कर रहा है into logical divisions, into invisible logical divisions. आप सोच लो कि functions की जरूरत क्या है जब आप पूरा code main function के अंदर लिख रहे हो. Well, guys, let me give you one quick example, and then we'll start with उसमें क्या drawbacks and why object-oriented programming is needed, right? So imagine, guys, I know all of you are from college, right? All of you are from college. So in everyone's college, there are a lot of student chapters, right? बहुत सारी student chapters हैं, and in every student chapter, there are many different, tasks or jobs that needs to be done. For example, there is a PR, there is, CSR, there is technical department, there is design department, and all that thing. Now imagine how difficult it will be for the president who is looking over the performance or the working of all other chapters. Usko agar hum, we give him one complete mess of all the jobs, how difficult will it be to manage everything? But what if we divide our entire chapter into logical divisions? This section will handle this task, this section will handle that task, and so on and so forth. Now all those sections will be having one representative who will talk to the president and tell, yeah, we did that work is solved, that is not possible, blah blah blah. And now it is easier for the president to manage everything. So basically functions give you that advantage in your code. They divide your code into logical sections so that managing and decoding, debugging is easier. So with that thing in mind, let's see what's some disadvantages in functions. Well, there is no disadvantage in function, but the thing is, functions are defined globally. And when you talk about global access to everything, वहाँ पे आती है security concerns, because it can access literally everything, and that is not something recommended when you go to a production ready software.
Production ready means it is actually used in your industries. So that is where object oriented programming is needed. You need object oriented programming to mimic real world objects, real world things, and code for real world softwares. But what are the advantages of object oriented programming? And before that, what is object oriented programming? So first of all, it is called OOPS, and it stands for object oriented programming. So OOP is what makes C++ stand apart from C. That this is the main reason why C++ was needed as a successor to C. बहुत सारी minor differences होती हैं, but the best thing about C++ over C is object oriented programming. So guys, here are some of the advantages of OOPS. We'll discuss the advantages, and with an example, I'll explain what is OOPS, and then we'll code how to make classes, how to instantiate objects, and all that. So, सबसे पहली advantage, OOP is faster and easier to execute and to code. It is easier to code. We'll do that in the code, and you'll feel how different and less stress it is to actually code in OOPS concept. OOPS provides a clear structure to your code. By looking at your code, you can just tell that the code is very much structured than a normal code, and that it removes redundancy. Guys, redundancy means repetition. There will be less repetition of code in your entire code, less repetition of lines, and as there is LOC is reduced, lines of code, so obviously maintaining and debugging is easier. And also OOPS, one of the most crucial advantage of OOPS is that it allows you to create reusable applications, reusable code. You can use your code in a better way, reuse your code again for when you make any other code, you can actually reuse the previous code and build upon it to make it even better. So keeping all that thing in mind, guys, let's understand what is OOPS. So yeah, C++ supports multiple inheritance. Yeah, of course it supports multiple inheritance. It supports multiple inheritance. It supports multi-level inheritance, and we'll discuss all of that. So guys, how OOPS gives structure and modularity to your code. So guys, सबसे पहले let's understand what is OOPS. So let's say this is what we are trying to code. We are trying to write a program that can represent and do some functions on real world object. For example, let's say we want to maintain a code which can store this data and then do something with it. Let's say some action with it. So अगर इस चीज को program करना है, first of all there is something called class. What is class? Class is nothing but a blueprint. It itself does not exist. It is an idea. A class is just an idea. खुद वो कुछ है नहीं, उसका आप कुछ कर नहीं सकते, right? Class itself is not usable, but when instantiated, उसके instances बहुत ज़्यादा useful होते हैं, and those instances are real world. For example, if I say you that this is a idea of a car. If I show you a design of a car, मैं आपको कुछ ऐसा चीज दिखा दूंगा. मैंने आपको एक डायग्राम दे दिया. This is a car. उस पे मैं बहुत सारी labels बना दूंगा. This is headlight. This is engine. This is rear exhaust and all that. उस डायग्राम को आप कुछ कर नहीं सकते. But if you actually manufacture that car and start using it, that is what you can use. So that is called object. ये जो बेसिक आइडिया होता है which the class defines, उस चीज को actually use करना, instantiate करना, that is called objects. Similarly, consider any real world example, any real world thing that can be broadly classified into multiple different things. For example, अगर मैं बोलता हूँ class animal class, उसके अंदर multiple objects आ सकते हैं, dog, cat, cow. If I say class college के अंदर इंडिया की सारी colleges आ जाएंगी, many different colleges. If I say human being के अंदर बहुत सारे, there are 7 billion humans on earth. So class is basically कि हम everything that you are defining, whatever they belong to, that is called class. For example, अगर मेरे पास एक बहुत सारी चीजें हैं, I have apple, I have bananas, I have in my fruit basket, I have lots of different fruits, apple, banana, mango, everything, papaya, tomatoes, everything. And then I say all these things which are in my fruit basket belong to a class fruit. So class is something that gives us an idea which defines some basic attributes जो उन चीजों में होनी चाहिए, and those are called
क्लास. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ क्लास एनिमल, उसके अंदर आती है डॉग, कैट, काउ एंड अदर एनी एनिमल दैट यू कैन इमेजिन विल बिलोंग टू एनिमल क्लास. सो what is class doing here? हम लोग सीधा सीधा dog, cat, cow क्यों नहीं बोल रहे? Why am I first telling that it belongs to animal class and then I'm defining that these are the different objects? The reason is the class animal has some ideas. If anything belonging to that class, everything in that class will follow those ideas. For example, a class animal says it should have a face, it should have legs, it should be able to breathe, it should be able to move and all that things. So animal class defines all that ideas कि इसमें ये properties होनी चाहिए, and only then if those ideas match then it should belong to that. So guys, that is a gist about how object oriented programming actually allows our code to relate to a real world object. So now let's do some see some real world example, and other than just examples as in these cow class and all, the we just discussed about lot of other advantages: faster, easier to execute, provides clear structure, connects to real world object, like something like this. But this is what one of the all of these advantages, maybe 50% of what makes OOP special, and this makes it contributes alone 50%. So what is this? You can precisely control the data flow. Now let me make you understand this with an example. Sorry about this, my whiteboard is kind of dirty. So basically, guys, all of us use Netflix, right? हम सब Netflix use करते हैं. So just imagine that the Netflix company has a one global database. Now we will see what is this and why this database is so bad. Why this is a bad approach. Let's look into that. So guys, let's imagine this is Netflix and this is Netflix global database जिसमें Netflix की सारी series, सारी movies, सब कुछ इसमें है, all the documentaries, everything. So here I have defined some of my favorite TV series, like there's this Sherlock Holmes, SI, पता नहीं क्यों लिखा था, PR is Prestige, JA is Jodha Akbar. Anyways, the thing is इसके अंदर सब कुछ है, and this is globally available as you can see here. So now let's say we all know that Netflix is available in different countries under different names. So for example, कुछ shows only Netflix UK में available है, तो उसके पास कुछ shows ऐसे भी हैं globally जो सब कोई access कर सकते हैं, but some shows are only restrictively available. For example, कोई एक शो होगा जो सिर्फ यूके में अवेलेबल है, कुछ एक शो होगा जो सिर्फ जापान में अवेलेबल है, कुछ एक okay, this is my bad, I have written Netflix Asia and Netflix Japan as different things, but imagine this is some other country. So कुछ ऐसे shows होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एशिया में अवेलेबल है, and that should not be available in UK. अब सोचो ये Netflix के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो जाता, क्योंकि उसका तो पूरा डेटाबेस ग्लोबली अवेलेबल है. अभी अगर उसको Netflix एशिया को कुछ दूसरा कंटेंट देना है, what will it do? It will provide an access to Netflix Asia to its entire database, क्योंकि एशिया का खुद का तो कुछ कंटेंट है, उसको तो चाहिए ही एक्सेस, राइट? सो नाउ इट विल गिव द एक्सेस टू Netflix Asia. Now Netflix Asia has the access to the entire database, and it can although it will check for some conditions, it will make sure that okay, these are the contents that I'm allowed to see, and it will give it to our users, right? These are us, this is us, we are the users. So it will check the conditions. Okay, this is Netflix Asia, these are the contents that I'm allowed to show, and it will show them. But the problem is it still has the access to the entire database. It still can use everything. So if somehow we hack into Netflix Asia, we can actually access the content, because Netflix Asia has a copy of the database. Similarly, there is Netflix UK. वो अपना data भी access कर रहा है from Netflix database, but other than that, it is also accessing everything that belongs to Asia, that belongs to Japan, सब कुछ. And this is the problem that procedural oriented programming cannot solve. आज तक हम अपना पूरा कोड int main के अंदर define करते थे, right? We were writing everything inside what is that? The main function. So the problem is main function के अंदर आप जो भी define करते हो, it is globally available to every other thing that is written inside your main function. अगर आप main function बाकी different functions use करते हो, we just saw how to write functions, right? So outside main there are many different functions. Now still they can access the global scope. अगर आप कोई variable को globally define करते हो, it can access everything. So that is the problem with procedural oriented programming. We cannot precisely control the data flow.
Now let's see how object-oriented programming solves that. So again, this is the same example. अब यहाँ पे instead of defining a global database, what we will do is we will use object-oriented programming. हम क्या करेंगे? एक class बनाएंगे and that class will call it Netflix core. So and we already know net class अकेले class is nothing important. We cannot do anything useful with it. It is just an idea. So class क्या बोलेगा कि everything that belongs to me should have a location, should have some private content, should have some global content, and it should have some policies which the users have to agree to use it. So there is our class Netflix core, and we will create objects of that class. Object means we will convert that idea into some usable thing. So Netflix core will be the base blueprint or idea on the basis of which all of this will be created. This thing, global Netflix India, Netflix Japan, Netflix UK. And other than that, there are some content which Netflix provides globally, जो सबको देखना चाहिए. We will define that in the class itself. In a let's, for simplicity, let's assume एक array के अंदर वो सब available है, global content. But यहाँ पे देखो private content blank है, location blank है. These are just ideas. This means कि यहाँ पे कुछ data filled होना चाहिए. So when we create Netflix India, it will inherit the global content thing. It will automatically have the global access to global content that should be available to everyone. Other than that, it will define its own private content. ठीक है? And वो ऐसे क्यों define कर पा रहा है? Because Netflix core already said everyone should have a private content. This is the basic idea of OOPS, how it allows you to control your data flow, because now this Netflix India has its own private content, and in the code we will simulate this this structure, and you will see that Netflix UK, it will have its own PC that is private content, and Netflix UK cannot see what Netflix India is doing. Similarly, Japan cannot see what India is doing, and none of them can see each other. This is how object-oriented programming gives you the access to precisely control data flow. So guys, these are the advantages of object-oriented programming. Data flow आपके control में रहता है, and you can closely mimic a real-world object. And that was a lot of theory, I know, but that is the vision or the mindset that you should have before coding object-oriented programming. So guys, let's start with the code. So give me some syntax. So this is how, guys, you create your class. But before that, let's first define a similar thing using procedure-oriented programming. So इस चीज को mimic करते हैं. We have something called animal, and it should have dog class, cat class, and cow class. So let's do the code. So I'm into my VS Code. I'll zoom in. And can anyone give me a quick information if the code is visible, or I should zoom in more? You are good to go. You can start now. Okay, thank you. So I'll do this, and let's start. Hashtag include, the first necessities include bits stdc ++.h using the namespace. इस चीज को प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे ही कर सकते हैं. सबसे पहले चलो एक एरे एनिमल डिफाइन करते हैं जो इन सबका नेम स्टोर करेगा. सो आई विल से my caps lock is on. String animals, let's say, and I'll define it as an array. I'll say dog, I'll say cat, and कौन सा animal था? Cow. Okay, so I'll define dog, cat, cow, and after that I will give them some attributes as a class जो define करता है ना, ideas जो सबके पास होना चाहिए. So I'm going to say everyone is obviously will be having some height. Float height is equal to an array, and now you will see how difficult it is to mimic real world objects in simple the way we have been learning right now, procedural oriented programming. And 30.4, and cow थोड़ी big होती है, so 200.9. These are in centimeters, not meters. Of course, I'm not making monsters. And अभी मैं सबको कुछ डाइट असाइन कर दूंगा. Yeah.
I think there was some of the lag in your internet. So can you please repeat what was told in the last 2 minutes? There was a lag for the last 2 minutes in your internet. Okay, okay, maybe. Yes. So can you So, please repeat the guys, coding part once yeah. So, guys, what I've done till now is basically my is structure को I'm trying to mimic this structure in my code using the things that we have learned till now using functions and procedural oriented programming. So basically there should be an array called animals. So I've defined animals. जिसके अंदर मैंने this string objects create कर दिया. And the reason that it swings an error is मैंने array decline नहीं किया. Then I've given some height to everything. Basically index के through height relate हो रहा है. 0th index dog height 60 centimeters, cat 30, cow 200. Then I'm going to give them some language in which they can talk. And since why am I doing this? Because I'm trying to mimic a real world object. And guys, as I write this code, you will notice how difficult it is to maintain real world objects through, this simple main function and procedural oriented programming. So what I'm going to do is language के अंदर मैं define करूँगा a dog that can bark, cat can, make its own sound, and cow will do what it does all day. And इतना ही करते हैं. And what I'll do now is, since we know how to define a function, what I'll do is I'll make a function जो हमें इसमें से किसी भी animal को talk करने की power देगी. And now you will see the real problem that exists in this approach. And then we'll do the same thing through object and make it much better. So what I'm going to do is I'll define a function to make animals talk. So what I'm going to do here is I'll say void please talk, and okay. Now what I'm going to do is इसमें जो भी animal का name pass होगा, I will print the way it talks, the language that it uses. So उसके लिए guys मुझे खुद बताओ, मुझे पूरा language का access चाहिए, right? Because वरना मुझे पता ही नहीं है कि मैं किसका output दूँ. So what I have to do here is I have to say I need the entire array as an input. String lang मुझे as an input चाहिए, ठीक है? मेरे को animals का भी input चाहिए, because then I don't know, otherwise I don't know which animal I'm talking about. So I'll say animal, array का भी input I will take, and then I also need the index at which that animal is present. So for example, what I'm going to do is I'll just quickly write the code for that. I'm going to write cout animal, and I'll say index जो मुझे input मिलने वाला है as a parameter, and I'll say says lang and index again. So guys, what I'm going to do is to actually call this function. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? Let's say what I want to do is I want to make a cow talk. Okay. Now what I'll do to what I'll have to the way I have to call the function is अब मुझे please talk function को call करना है basically. And now just because मुझे देखो मेरा goal क्या है? I want to produce the sound of a cow, but in order to do that I have to give the entire arrays as an input so that it can pick the sound of a cow. And what I have to do is मैं animals pass करूँगा. Okay, first parameter language है. So I'll pass language, and I hope the syntax of function is clear to everyone because we have just studied that as Kshitij sir has taught you. So similarly, first input language है, तो मैं language pass कर दूँगा उसमें, मैं animals pass कर दूँगा, animals, and I'm going to pass the index. So since I want to hear the language of cow, I'll pass index 2 because 0 पे dog है, 1 पे cat, 2 पे cow. So I'll say 2, and I'll just run this code. Okay, why is there is no error? Cool. Okay, so if I run this code, you can see the output is cow says moo. ठीक है, code अपना काम हो गया. But how well have we done it? How efficient is our code? We just gave it the entire database, language, animals. Language contains all the sound of all the animals that exist in our database and everything. And you can kind of relate to this problem that we are facing here with this example.
कहाँ गया? Okay, this slide here. So basically, we are having our entire database here, Netflix database. You can relate to this as this is our entire database where we have sound of all animals, height, their language, and just to produce, for example, assume that is Netflix Asia is this function here, Plistalk. Now, what Plistalk is doing, we just want to hear the language of cow. But just to do that, we are passing it the entire database, and वहाँ पे ये अपनी condition लगा रहा है, animal और index डाल रहा है of the cow. But the problem is, it has the access to entire database. हमारा data secured नहीं है. अगर ये function चाहे, it can use index -1 and index -1 here. And if I run the code now, it can access other data from our database. It can access cat, it can access cow, and it can access everything. तो हमारी data restrict नहीं हो रही है. Everyone can access everything. So now this is the main problem of object-oriented programming. Data restrictedly flow नहीं होता, कोई भी किसी को भी access कर सकता है. Now let's solve that. Now let's do this exact thing through OOP concept. Now, to just make it more comparable, I'll open it in side-by-side mode. So let's write this code in OOP concept. And before I do that, guys, is there any problem, any doubt till now? Any doubt till here? No. Okay, cool. I hope there should be no doubt. And this is the way how you pass an array to your function as a parameter. Okay, no doubts. Cool. So now let's do this thing that we have written in POP, procedural oriented programming, through object oriented programming. Now, first of all, the custom I have to include. Okay, let me just copy paste, include and namespace. Cool. And here I'm going to define my main function. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to follow the syntax that we have just learned. In order to define a class, I will have to say class name, the class keyword followed by the name of the class, and then within curly brackets, I'll define its attributes and methods. I'll come to that what it is. I'll show you that in a code, and then एक semicolon देनी होती है last में just to signify that the definition of class has ended. So let's define a class, and we already know what a class is. Our class is class animal. So let's define class animal, and to do that, I follow the same syntax. Define class animal. Cool. So what I'll say is class animal, as simple as that. We defined our class. Okay. This is how you. This is the basic boilerplate for defining a class in C++. The keyword class, and then the name of the class, and then curly braces, and then at the end you have to use the semicolon. And what I'll do now is, as you can see in the syntax, you have to give an access specifier. We'll look into details. Access specifier change करने से क्या-क्या changes होती है in your entire code. For now, let's use the public access specifier. When you say public, it basically means everything that is inside your class can also be accessed by your main function or any other classes. So for simplicity, let's define it public, and then you have to give a colon just to make sure that the public scope has started now. उसके अंदर I will define attributes. Now, what are attributes? So, since object-oriented programming is made to mimic real-world objects, every real-world object has some attribute. Now, you might be thinking, what is an attribute? Attribute is basically the properties, the basic property that anything belonging to this class animal should have. So, if I would have used here class human, then it means इसके अंदर जो भी attributes होंगी, it is something that every human should have to be counted as a human. For example, you can just look at yourself. What are your properties? You have 2 eyes, you have 2 heads. Single head. My bad. 2 legs, 2 hands, single stomach, shoulders, all that. Those are your properties. You can see, you can do all that stuff. So, guys, these are called attributes. The basic properties that should be available with everything that belongs to class animal. So, अभी मैं attributes में क्या define करूँगा? You can see in the previous code,
the attributes were height and language. So I'll define the same thing here. Float height, float height and string language. And having done that, I have defined my attributes. And with that, इसको plus stock को भी हम define करेंगे. But for now, let's go with attributes and then we'll define functions. So I have defined height and attribute, but we cannot use this standalone. This piece of code, this code snippet, class animal and 2 attributes, we cannot directly access it or make any use of it. To use it, we actually have to instantiate it. This is an idea, this is a blueprint. Every house before being built, it has a blueprint, but you cannot directly stay in that blueprint, right? Blueprint a picture, right? You cannot stay inside it. You have to make a house on the basis of that idea defined in blueprint. So this is the blueprint. Now let's create an object or bring this idea into existence. The way you do that is when you define a class, ये जो class का name है animal, it is your own data type. जैसे C++ में data types होता है, we have been using tilde, float, string, all that. When you define a class, this class itself is a data type which you have created, and hence classes are also called user defined data type. And what I'm going to do is I'll use my own custom data type, animal. I'll say animal, and this is a data type. And inside animal, I'll simple way, the way you declare simple variables like float height is equal to dash dash dash. I'll say animal and my animal. This is just a variable name. My animal is equal to, sorry, abhi is equal to nahi karna, baad mein karenge. Animal, my animal. So I defined a variable which is of data type animal, जो मैंने ही define करा है. So this my animal now has 2 attributes inside it. अब वो सिर्फ उसी को belong करता है, height and language. So let's give it a height and language. And the way you do that is, it's called a dot operator. Now we will use dot operators. And yes, this is how you create objects. The object is created. Object of class animal. Okay. Now I'm going to give it a height and a language जो मैं अंदर define किया. To do that, I would have to say my animal dot height is equal to okay, something that I have missed here जो मुझे यहाँ पे करना चाहिए था. मुझे उसको एक name भी देना चाहिए था. String name, ठीक है. And first of all, before doing this, let me say my animal dot height is equal to 20.5. My animal dot name is equal to 20 centimeters. किसका height हो सकता है? Cat. Cool. And I'll just move this line above. And my animal dot language is equal to yeah. Okay. And with this lines of code, we have successfully created our object. We have assigned it the value to its attributes, and if you want to use it, if you want to display that into your code, you can say at your terminal, you can say cout hello from space. I'll use my animal dot name and line. Okay, now we have since we need honey, I'm going to minimize it a bit. Okay, and just like that, guys, we have and the name of the program is OOP. And just like that, guys, we have defined our first object-oriented programming based thing. So hello from cat. And now let's see हमारा data कितना safe है, because हम previously देख रहे थे just to use some function inside it, वो पूरा data access कर पा रहा था. Now that was a breach of data. We were not able to control how our data was flowing. Now to do that, हमें एक और object create करनी पड़ेगी, right? अभी तो एक ही data and of course it can access itself. And every time इतना मेहनत करना, we define an object, then we use my animal dot name, my animal dot height, and one by one manually we are setting a value to it. I don't want to do that much because this is, does not follow the concept of object-oriented programming. Object-oriented programming बनाया गया था to, implement this concept called try. Do not repeat yourself. We're not going to do that. So we'll do something very, which will remove redundancy. We don't have to define, manually set the values. I use something called constructors.
So what are constructors? Constructors are something, a special function, a special method or function defined within your class, which can, give default values, which can assign some default values to your attributes. So to define a function, what you define a constructor, the syntax is, it has no data type. It does not even have to be void. आप void भी नहीं use कर सकते, आप कुछ return type नहीं दे सकते. A constructor has no return type. It can have parameters, but it should have no return type. And the name of the constructor should be exactly equal to the name of the class. So to give a constructor to my class animal, I'll say animal. And okay, so I'll say animal. And with an animal, I'm going to use, okay, there are a lot of doubts, I guess. Yeah, मुझे क्यों tag किया जा रहा है? OP. Okay, I thought those are doubts. Okay, cool. So I have defined a constructor, and just to make sure, when is the constructor called? Constructor define तो कर देंगे, but क्या उसको अलग से call करना पड़ेगा? Because till now we have seen, if we define a function, we have to call it from within the, we have to call it. Let's say we have a function called add. As Shudit sir showed you, we defined a function add, and to use it, we had to specifically say add, and जो उसमें parameters pass करते थे, तभी वो work करता था. But a constructor is a default function which is defined within class. It will be automatically called जब भी आप ये line लिखोगे. This line जहाँ पे object create हो रहा है, whenever this is called, constructor is automatically called. So let's do that. I have defined a simple constructor. This is called default constructor because इसमें कोई parameters है नहीं. So this is called a default constructor. And I will say animal is born. Okay, and I'm going to change the line. So just like that, we have a default constructor, and basically वो print करेगा. And यहाँ पे देखो guys, I'm not going to change any code inside main function. अभी सब कुछ same है. मैंने simple object create किया and assigned its values. And now if I run the code, you can see the first line is printed, animal is born, because whenever this line is executed, जब भी हम object create करते हैं, constructor is automatically called, and that is why this is called a default constructor. But now the reason that we created our class animal, okay, something else जो हमें logically करना चाहिए था, class animal exists to give a default value to your class animal, so to your attributes. So what if अगर मैं इसको कोई value input ना दूं, मैं इन inputs को ना हटा देता हूँ, मैं कोई default manually set नहीं करूँगा. Inside animal I'll say name is equal to human. By default, I'll make sure that every animal is a human, and I will give it a height. Height is equal to, let's make this a monster. I'll say 1000 centimeters. Okay, 10,000 ho gaya. It's even cooler. And I will give it a language, Hindi. And I want that every human that is created from this class should speak Hindi. So ये है मेरा default values. मैंने हर एक को default value दे दी. Now in case I do not assign the values manually, उसके पास by default ये values आ जाएगी. And let's verify it. So यहाँ पे to make it even more clearer, मैं यहाँ पे बोलूँगा I speak. यार ये name बहुत ज़्यादा बड़ा, मेहनत करना पड़ रहा है. I'll say AN. AN भी नहीं से पहले लिखूँगा. Cool. So I'm going to say a dot language, and यहाँ पे I'll have a cool. And if I run the code now, you can see by default, hello from human, I speak Hindi. I did not give it any value. But still सबके पास एक default value है. अगर मैं ऐसे 5 objects create कर दूँ A, B, C, D, and I don't give them any default values, मैं किसी को भी default values नहीं दूँगा. I'll print this line 5 times and I'll say B, C, D, B, C, okay, sorry, B, C, and D. Cool. And I'm going to run this code again, and you can see everyone will have that default value. And जब भी ये line create, जब यहाँ पे मैंने ABCD लिख दिया तो 4 objects create हो रहे हैं, and hence animal is born is printed 4 times, and everyone has that default value जो हमने उसको दिया है. Now guys, I know it's almost 7:30. Just one quick
look about what is parameterized constructor, and we'll continue from here in the next class, right? So हम क्या करना चाहते हैं? We don't want to give everyone a default value. I want to make sure that everyone has some manual value. But मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे हर बार manually define ना करना पड़े ऐसे. I don't want to set it manually. What I want to do is during object creation मैं चाहता हूँ कि वो automatically मेरे defined values के साथ हो. Now the way I will do that is called parameterized constructor. And what is parameterized constructor? Basically, it will follow the same name of the class, and inside that I will accept some parameters: string name, float height, and string language. अब यहाँ पे एक cool concept आता है, एक a very cool thing about OOPS, which C++ introduced, this operator, this keyword, और उसको this pointer भी बोलते हैं. So you can see यहाँ पे हमारे क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है नेम, हाइट, लैंग्वेज, एंड दैट इज अगेन समथिंग दैट वी आर आल्सो कीपिंग द सेम ऑब्जेक्ट नेम. अब मैंने जानबूझ के पैरामीटर का नेम यही रखा है, सेम टू सेम द वे वी हैव हियर. And guys, this is going to cause ambiguity or doubt while writing the code. If I say name is equal to name, now we know what we mean as code. हमें पता हम क्या बोलना चाहते हैं, because we are importing the parameter name as name, and there is a default attribute in our class name. हम ये चाहते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जो भी पैरामीटर वैल्यू आए वो ऑटोमेटिकली हमारे एट्रीब्यूट में फिट हो जाए, असाइन हो जाए. But this makes, you know, very ambiguous for someone else who reads our code. उसको नहीं पता चलेगा why is something written like this, अपने आप को क्यों assign कर रहा है. So to make this easier, C++ has introduced something called this pointer. जब मैं ऐसे this लिखता हूँ, this is the syntax of writing this. You use this and then a hyphen and a greater than symbol. This makes sure that this क्या करता है, this basically एक pointer है, ठीक है. And जब आप एक object create करते हो, when I'm creating object A, then that object A, that instance, that object is represented by this. So within a class, when an object is being created, you can refer to that object by using this. And this is just a, you know, this arrow function, ये जो मैंने ऐसे arrow लिखा है, this is just a convenient way to do this. The manual way to do this is using, you know, the way how we have always done, using the asterisk dereference operator and then a full stop. So that way is also possible to access it, but ठीक है, easier way है the defined way जिससे errors कम होती है, so we'll use that. This name is equal to name. I'm going to say this means the attribute that belongs to the class. So this height is equal to height. So this resolves ambiguity. ये compiler को बता रहा है कि this name, it means इसको reference to that attribute, and name means the parameter that we have got. And finally एक और this for language, and I'll say language. And guys, just like that, हमने एक parameterized constructor बना दिया. This is called a parameterized constructor. And what I'm going to do is, instead of simply creating objects, okay, instead of simply created objects, I will directly assign it values. I will directly initialize it while creation. And to do that, I have to say animal B, and within common brackets, मैं उसको इसी order में values दे दूँगा, name, height, language. And what I will do is I will give, say, let's say dog. Language, okay, second is height, so I'll say 60 centimeters probably a dog is, and language is cool. So with that being done, इसकी ज़रूरत नहीं थी, I will just uncomment this line. So guys, when I run this code, ये जो line है animal A, इसमें मैंने कोई, you know, parameter दिया नहीं है. So ये क्या करेगा, ये automatically default constructor के साथ initialize हो जाएगा. It will use the default values. And this line, since इसमें मैंने manually एक parameter दिया है, so it will connect to this parameterized constructor. And guys, a lot of you were asking what is function signature. This is function signature. Name and then the list of parameters. This constitutes the function signature. This is how you know, compiler will link to the function while calling it. You can see first is a string, float value, string value, and string value. So this is how the constructor connects to it.
order in which the parameters are defined and the name of the function. This makes the function signature. So guys, I'll just quickly run this code, and you can see when I run it, first of all ये object A create होता है and it prints animal is born and it is created. So जब मैं A को print करता हूँ, you can see hello from human, we speak Hindi because that is the default value जो उसको assign हो रही है. And then मेरी custom object create होती है with my parameters constructor, and it says hello from dog, I speak Bobo. Sorry, Bob. And some cool stuff is that a डॉट नेम जब ही ए अपनी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, उसको सिर्फ उसी का नाम एक्सेस हो रहा है. ए कैन नॉट एक्सेस द ऑब्जेक्ट ऑफ बी. इफ आई राइट समथिंग लाइक ए डॉट बी डॉट नेम, यू माइट थिंक दैट ये मुझे ए के अंदर से बी का नेम उठा के देगा, बट दैट विल नॉट वर्क. दैट विल नॉट वर्क. एंड दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेक श्योर दैट ए के अंदर जो भी डेटा है वो प्राइवेटली सिक्योरली स्टोर हो एंड नन ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स कैन एक्सेस इट. एंड जस्ट लाइक दैट गाइस, हमने प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की उस ड्रॉबैक को ओवरकम कर लिया. पहले कुछ करने के लिए हमें उसको सारी डेटा देनी पड़ती थी एंड तभी वो वर्क हो रहा था. नाउ वी डोंट नीड टू डू दैट. एंड जस्ट 1 मिनट लगेगा. लेट मी ऑल्सो डिफाइन दिस plisstop function. What I'll do is inside animal I'll use that same syntax, void plisstop. So I'll say void plisstop. अब मुझे इसको कोई input देने का जरूरत नहीं है because it belongs to the class. It can already access the name or height that is assigned to it. Inside it, I'll just say cout, I speak, and I'll say this, क्योंकि वो automatically अपने आप को सिर्फ अपने आप को access कर सकता है. So using this operator, I'll access the language that it speaks, the language that is assigned to it. And if I now to call yes. There is a query about this operator. Can you please explain this operator in a great depth and please explain it a bit again? As many of the participants are facing queries about this operator, not only one or two. There are many of the. Okay, so guys, what this operator is basically doing is यहाँ पे हमने object create कर लिया animal A, animal B. अब ये animal A जब भी हम use करते हैं, whenever we just write this line animal A, वो automatically class animal को create करता है, एक object create करता है. On the basis of this idea, it brings that idea to existence, and inside the default constructor ये सबको ये values use कर रहा है. अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमें this operator का जरूरत नहीं पड़ा. But when I am using this this line animal B, इसमें मैंने कुछ parameters pass करे, and when I am assigning those parameters, I want to make sure कि animal B जब create हो रहा है, now the name of my object is B, so class को नहीं पता ना, class को ये चीज नहीं पता. Class doesn't know कि now when it is being called, whether it is being called for object A or object B. It has been called and it will just do what it what it is supposed to do. It doesn't care whether we are calling it for a different object or for any other previous object or anything. So to clear that ambiguity, to clear that doubt, to tell the compiler that for what purpose the class is being called, we use this. This के अंदर सारी data होती है. I mean the entire object B. अभी जैसे हमने B को call करा, when I'm saying animal B and create a object with this parameters. So what this is going to do is this के अंदर सारी data होगी regarding the name of the object, the location of the object in memory जहाँ पे वो store हो रही है, because this is a pointer. And this clears the ambiguity. This tells the compiler कि now I am referring to class animal for this object. For this object, this is basically an instance क्योंकि class को literally there is no idea inside class. Class has no idea for what purpose it is being used. When you say this, it means whatever the current object that has called the class, so assign that variable to that particular object which is currently calling you. So जैसे हम animal B को call करते हैं, object B is calling class. So this will tell the compiler that I am object B and I am calling you. And to do that, I have to use this. अगर मैं this नहीं use करूँगा तो still then the code will work, but readable नहीं होगा. See for example, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, what sense does it make? It is saying name is equal to name. इसका कोई sense नहीं है, but the code will work. Code will work just fine. Hello from, okay देखो name assign भी नहीं हुआ. My bad, name assign भी नहीं हुआ. Hello from human.
name variable blank है, you can see, because यहाँ पे क्या हुआ, I'm just doing name is equal to name, parameter is equal to parameter. This makes no sense. ये तो true भी है, name is obviously equal to name, वो अपने आप को refer कर रहा है. Compiler differentiate नहीं कर पा रहा है whether we are referring to this parameter जो input में आई है, or we are referring to the variable name जो attribute में defined है, string name, which is an attribute of class. To make that clear, we use this. So compiler को अभी कोई doubt नहीं होगी कि the name that we are accessing now, whether it is the parameter name or the attribute which is the default property of class. To make that clear, we use this. And class के अंदर आप जितने भी functions define करते हो, this is the other use of this. This makes it so easy. Whatever other functions you are using inside your class, it can through this through the this keyword, it can access the attributes. तो अगर मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ plistalk, जो पहले क्या करता था, उस एनिमल का लैंग्वेज आउटपुट देता है, ठीक है, सिर्फ एनिमल का लैंग्वेज आउटपुट देता था by using language array and that index. Now instead of doing that, the easier way that object oriented programming helps us to do is simply this use karo. This will automatically connect to whatever object that is being called now and uska language print kar do. Compiler will intelligently handle everything that you want to do, and it will just connect to connect to the current object and print its language. So let's see how to do that. मैंने function define कर दिया, cout, I speak this language. Just remember this like this, key, okay, this like this, that is confusing. This is just something that refers to the current object. Class doesn't know who is calling it. To tell the compiler that who is calling the class, we use this. This automatically refers to the current object which is being called to the class. Okay, just remember like that. So अभी अगर मुझे this example से और थोड़ी clear हो जाएगी. Let's say मुझे अभी plistalk function को call करना है for object b. What I'll do is I'll say b dot plistalk, ठीक है. Now the moment this line is executed, ये क्या करेगा, ये compiler को बोलेगा कि call the function class and within class there is this function plistalk. So of course class के अंदर हमारी function है plistalk, and जब ये create हो जाएगा, this basically क्या करता है, this tells the compiler कि b ने call करा है, so b की language print करो. And basically अगर compiler के अंदर जो ये वाली line है, this language, ये कुछ ऐसा दिखेगा कंपाइलर को, b डॉट लैंग, ठीक है. जैसे हम पहले b डॉट लैंग प्रिंट करते तो लैंग्वेज प्रिंट होता था. नाउ b डॉट लैंग हम क्लास के अंदर नहीं लिख सकते. आई कैन नॉट राइट हियर b डॉट लैंग बिकॉज क्लास को कोई आइडिया नहीं है b क्या है. क्लास सिर्फ एक आइडिया देता है, उसको कोई आइडिया नहीं कि उसकी आइडिया कैसे ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट की गई है. एंड दैट इज द रीजन वी कैन नॉट यूज b, because b is just a object that is created on the basis of that idea. We cannot use b dot lang inside the class. That is why we use this, and this will tell the compiler कि जब language print कर रहे हो, use the language of b. And I run the code. You can see it works fine. I speak both because I called class b. ठीक है. So guys, that is about compilers. I mean, that is about object-oriented programming, and this is just the starting of object-oriented programming. There is a lot of things that I want to tell you about. There is a lot of things that you have to learn about object-oriented programming, inheritance, reusability of code, and how our data is secure now. You can see that अपना data secure है. A cannot access B, B cannot access A. And that is all about today's session, guys. If you have any doubts, please feel free to ping in the chat. Guys, I think Shruti is saying anything. Shruti, your mic is muted. Okay, guys, so आज के सेशन यही मतलब ओवर करते हैं, ठीक है. Let me send you the attendance. There was some of the doubts regarding this constructor. Till then, you can pass the attendance form. Shruti, कल ले लेते हैं. I think doubt क्योंकि अभी time है, and some of them. So let's take the doubts tomorrow. मैं attendance form share कर दिया guys मैंने, ठीक है. Do fill that attendance form because आज के सेशन में, और वही फिल करे जो आज के सेशन में आना चाहता है. इट विल बी एट 9 PM, ठीक है. जिसको नहीं आना है वी विल नॉट कंसीडर द अटेंडेंस, बट इट विल बी अ इंडस्ट्री सेशन, ठीक है, जहाँ पे रेडिट के मेंटर होंगे, एंड ही इज वर्किंग ऑन रेडिट इन रेडिट फ्रॉम पास्ट 5 years, ठीक है. तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है. व्हाट इज लिनक्स, डेवऑप्स, और लिनक्स और AWS क्लाउड क्या होता है, हाउ टू मेक करियर इन रेडिट एंड ऑल. तो डूड नहीं, वॉच नहीं करना है. यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेरीज. वहां पे कोई म्यूट पे नहीं रहेगा. यू ऑल कैन आस्क योर क्वेरीज.
ठीक है, एक लाइव इंटरेक्शन होगा वहाँ जो पे हम बहुत प्लान कर रहे थे, एक ठीक है। तो वी कैन डू द लाइव इंटरेक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो डू फिल दैट फॉर्म, आपके पास आई थिंक लिंक आ जाएगा। डू ज्वाइन एट 10 to 15 मिनट्स अर्लियर, क्योंकि सर के आने के बाद मे बी इट इज वेरी टफ फॉर अस टू एक्सेप्ट ऑल द इन्विटेशंस, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, एंड यू फील कि यार देखो, डॉट क्वेश्चन मार्क एंड अनदर ऑर्गेनाइजेशन हम कितनी मेहनत कर रहे हैं टू इंटरेक्ट विद इंडस्ट्रीज गए तो लाने के लिए। गिटहब का सेशन यार जल्दी होने वाला है, पहले एक बार हम सी प्लस प्लस में अच्छा सा हैंड्स ऑन कर ले, उसके बाद हम गिटहब का सेशन रखेंगे, करेंगे गिटहब का सेशन करेंगे। यू विल और गेट द पोस्टर वेरी गिट सून गिटअप ऑन के योर अलावा इन भी योर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, सिर्फ गिट गिटअप को क्यों फोकस कर रहे हो? मतलब इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि सब चीजें शेड्यूल्ड हैं, एंड देयर इज नथिंग दैट वी हैव सेड एंड वी हैव फॉरगॉटन द थिंग्स। ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड दैट इज रिवील्ड टू यू, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग विल बी अच्छा कवर्ड। अच्छा। बट अभी जो चल रहा है, एक पहले एक उसको डेप्थ बेसिक में करो, उसको अच्छे से करो। एक बेसिक बता देता हूँ गाइस, एक बेसिक बता देता हूँ गाइस। लोग पूछ रहे रेडिट के बारे में। रेडिट इज सिमिलर टू एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एक ड्रीम कंपनी रहती है इंजीनियर्स के लिए टू प्लेस्ड इन रेडिट, ठीक है। जिसके एवरेज पैकेज 10-15 लाख, कोई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जो बिग ब्रांड्स हैं उनके टॉप नोच कंपनीज में आता है रेडिट, तो आना यार। कॉम्पिटिटिव कोडिंग यार, पहले सी प्लस प्लस के बेसिक क्लियर करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव कोडिंग, डीएसए एंड ऑल पार्ट्स। एंड व्हाट विल बी द ड्यूरेशन? हाफ एन आवर का सेशन होगा सर, हाफ एन आवर के लिए आ रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरी टाइट शेड्यूल, ठीक है। और जिसको अटेंडेंस गाइज, हाँ अगर आप अटेंडेंस मिस कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट यार, अटेंडेंस की सीन नहीं है, आज की अटेंडेंस की सीन नहीं है, आज उनके लिए अटेंडेंस है जिसको आना है। मतलब अटेंडेंस नहीं भी फिल करोगे, जिसको नहीं आना वो नहीं फिल करे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नो 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 नो, अटेंडेंस उससे नहीं होगी। सेशन की अटेंडेंस के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के सेशन की अटेंडेंस हो जाएगी, जिसको नहीं आना वो ना आए, बट इट विल बी अ लाइव इंटरेक्शन विदाउट इंडस्ट्री मेंटर। तो आई थिंक सो इट विल बी ग्रेट फॉर यू गाइस, हमें तो अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे। Okay, यहाँ thank पे you, एक बहुत Muskan. सारे डाउट आ रहे हैं कि That's आज सेशन का ड्यूरेशन क्या होगा। मतलब ऐसा सेशन होगा आज के दिन कि यू विल फील कि यार देयर आर सम कम्युनिटी जो लाइव इंटरेक्शन कराती है फ्रॉम दीज मेंटर्स, बिकॉज दीज आर दी मेंटर्स जिसके साथ अगर आपको टाइम लेना है, यू नीड टू स्पेंड सम योर मनी, योर टाइम, और आपको बहुत दिनों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा फॉर देम, टू देम कि यार हमें टाइम दे दो। एट 9 PM वी हैव अ सेशन विद सर, 9 PM, 9 PM अप्रोक्स, अब से एक Length, घंटे बाद। length of the session. I think they are asking about the length of the session, the हाफ duration of एन the session. हाफ एन आवर हाफ yes, एन आवर WhatsApp ड्यूरेशन। पे आ जाएगी link. व्हाट्सएप ग्रुप पे ना लिंक नहीं, लिंक चलो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके गाइस, आई विल सेंड टू व्हाट्सएप ग्रुप, बट ये वाला फॉर्म भर देना, इससे अटेंडेंस पता लग जाएगी आप सभी की, ठीक है। अटेंडेंस वगैरह के लिए Yes, तो भर दो। WhatsApp group क्या सब मेल तो चलाती होगी ना, तो it will be great if you receive it on a mail, because we want to do something that is for the live learners. आप लोग जो यहाँ पे आ रहे हो, there is something that some time that you are dedicating, and we want to do something for you. तो आई थिंक वी आर ओवर विद दिस सेशन। हाँ तो चलो, थैंक यू वेरी मच यार, अच्छा लगा बात करके। एक मुस्कान का बहुत अच्छा कमेंट है, फर्स्ट पूरे सेम में समझ नहीं आया था, अब समझ में आया जाके। ग्रेट। Thank you, तो Muskan. अभी That's very sweet of you. आई थिंक हाँ, गौरव सर के साथ है आज तो सेशन, आज सेशन गौरव सर के साथ है। एंड होपफुली नेक्स्ट सेशन संडे को जो मेंटर सेशन है हमारा रियल टॉक विद, वो इनके साथ होने वाला, नितिका मैम के साथ होगा जहाँ तक। तो विल ट्राई कि बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट मेंटर आपके लिए लाया जाए, एंड फॉर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो 30 मिनट्स का स्लॉट होगा ना गाइस, ये 30 मिनट्स आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। बी प्रिपेयर विद योर क्वेश्चंस जो है आपके दिमाग में कि यार मुझे ये पूछना है ना, है ना। और रौनक जिसके साथ भी हो, पता है रौनक एंड अदर जो आज स्ट्रीम पे कुछ कुछ बोल रहे थे, वी हम कुछ लोगों को ब्लॉक करा है, कुछ लोगों को नहीं भी करा है, बट ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम। ये कोई वाइन्स नहीं है, ये कोई गेमिंग स्ट्रीम नहीं है, दिस इज अ एजुकेशन स्ट्रीम। आपको मार के बिठाया नहीं जा रहा है गाइस, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको अटेंड करने हैं तो अटेंड करिए, नहीं तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में लीव करने का ऑप्शन है, कैन लीव नाउ, ठीक है। तो प्लीज जो आज डेकोरम थोड़ा डिसबैलेंस हुआ है वो मैं देखता हूँ, और मेरी टीम की तरफ से भी अगर कुछ हुआ तो सॉरी फॉर दैट टू, ठीक है आपको, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, एंड आज की स्ट्रीम बहुत सही रही, कल मिलते हैं
है ना? SS in the And same. we'll join at 9 So p.m. अगर अच्छा लगे तो if you have any doubt regarding industry तो कर सकते हैं join. Okay, Soma is asking, can we say overloading and template is similar? Guys, that just means ki template is just an easier, convenient way to do it. All the different overloadings in one line. So you can yes, think and of it like overloading also work with different of the values, but template work with only the defined values only. yeah. वाह, जय यादव का एक बड़ा खतरनाक कमेंट है. जय यादव का कमेंट मतलब कि सार्थक